पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चलिए हमारा पैनल तैयार है, उनके पास चलते हैं और एक्सपेक्ट जानते हैं कि क्या आरबीआई से एक्सपेक्ट करें। गुड मॉर्निंग अदिति, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आज 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि स्टांस चेंज होगी। सीआरआर में भी कोई कट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ और इतने लिक्विडिटी मेजर्स ऑलरेडी जो आ चुके हैं, तो शायद इस बार और कुछ खास लिक्विडिटी पे ना आए। जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है उसी को रिट्रेट किया जाए। ग्रोथ फोरकास्ट हो सकता है कि एनएसओ के एडवांस्ड एस्टिमेट की तरफ हल्का सा कम किया जाए। इन्फ्लेशन में मेरे हिसाब से अभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। रिस्क्स तो ऑफ कोर्स फ्लैग होंगे, स्पेशली जो एक्सचेंज रेट में हमने वॉलेटिलिटी देखी है, डिप्रिसिएशन देखी है। आई थिंक इस पे थोड़ी बहुत कमेंट्री मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। चलिए, राइट। तो अदिति को लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, लेकिन और ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, राइट? मार्केट क्या उम्मीद कर रहा है अनुज जी? मार्केट में शायद 25 बेसिस पॉइंट का कट तो एंटिसिपेटेड है, लेकिन इससे अलग कुछ हुआ तो मार्केट खुश होगा या कुछ और उम्मीद है मार्केट की ज्यादा बड़ी? देखिए 25 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट आया सिर्फ, तो मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेगा। क्योंकि वो तो अब मार्केट पचा चुका है अच्छे से। लेकिन इशू पता है क्या है कि पॉलिसी में सिर्फ रेट कट ही इकलौता चीज़ नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। लिक्विडिटी, वो एलडीआर, काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। और क्या, और अगर बाई चांस कुछ एक्सेप्शन आ गया, 25 के बाद 50 आ गया तो ये आई थिंक थोड़ा सा एक इशू रहेगा विपिन जी। लेकिन आई थिंक मैंने एक चीज़ जो पिछले 20 साल में सीखी है ना, नेवर सेकंड गेस द आरबीआई। आ जाने देते हैं, एक बार आ जाने देते हैं, उसके बाद मार्केट आपको भरपूर मौके देगा, उसी के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी गुड मॉर्निंग, बताइए मनी मार्केट क्या प्राइसिंग कर रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई से? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सी मनी मार्केट, मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स 25 बेसिस पॉइंट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम भी 25 बेसिस पॉइंट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आरबीआई ने लिक्विडिटी पे ऑलरेडी मेजर ले चुका है, जिसके कारण उन्होंने 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी दी है, लेकिन उसमें से 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी उन्होंने 60 डेज और 6 महीने के लिए दी है। हमारे हिसाब से यहाँ से लेकर मार्च एंड तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ती है, जिसके कारण मार्च महीने में वापस से लिक्विडिटी टाइट होने वाली है। तो आज आरबीआई लिक्विडिटी मेजर ले नहीं, लेकिन कुछ कंफर्ट दे के जरूरत पड़ने पर वो लिक्विडिटी ऐड करेंगे। तो हमें लगता है कि 1 लाख करोड़ और लिक्विडिटी की जरूरत है। वो या तो आरबीआई ओएमओ का गाइडेंस दे, या सीआरआर कट जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हमारे हिसाब से आरबीआई सीआरआर कट करने की भी सोच सकता है, क्योंकि 90,000 करोड़ जो लिक्विडिटी आरबीआई ने दी है वो काफी छोटे समय के लिए दी है। और तीसरा, एक जो 2023 में आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर हाइक किया था, क्या इस समय आरबीआई इंक्रीमेंटल सीआरआर कट कर सकता है, जो मई महीने में आरबीआई रिवर्स कर दे? क्योंकि मई महीने में आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 से 2.5 लाख करोड़ का डिविडेंड दे सकता है। सो वो लिक्विडिटी तभी आरबीआई सिस्टम से निकाल सकता है। तो हमारी व्यू है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट, और हम लिक्विडिटी पे आरबीआई से गाइडेंस की उम्मीद रखते हैं। जी, तो एक उम्मीद ये है मनी मार्केट की कि लिक्विडिटी तो है, अंदर जाते हैं जैसे जैसे आप पॉलिसी को समझते हैं या आरबीआई के कदमों को समझते हैं, तो देखिए वो सिर्फ 6 महीने का पीरियड है, उसके बाद और लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या वहाँ आज गवर्नर साहब कुछ कहेंगे? कुछ मेजर्स जो यहाँ दीपक बोल रहे हैं क्या होते हुए वो नज़र आएंगे? हिमांग साहब भी हमारे साथ हैं। हिमांग साहब, अगर मान लीजिए थोड़े और सरप्राइजेज आते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट देखेंगे हम? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो मेरा ये है कि हालांकि मार्केट में काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन है रेट कट होगा, बट ज्यादा जो तवज्जो है, इंपॉर्टेंस है, वो मुझे लगता है कि आरबीआई लिक्विडिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाने पे करेगा। क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड, पिछले 6 महीने में जो आरबीआई ने काफी सारे मेजर्स लिए थे, टाइटनिंग की थी, उसकी वजह से पूरा स्लो डाउन और ये जो इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं वो है। और जिस आज की तारीख में करेंसी का डिप्रिसिएशन हम देख रहे हैं, तो उसमें रेट कट उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। तो शायद वेट करेगा। मुझे नहीं लगता कि जरूरत भी है और करना भी चाहिए ये टाइम पे। थोड़ा लिक्विडिटी बूस्ट करने के बाद, ग्लोबल हालात को देखने के बाद अगर रेट कट होता है तो वो एक मीनिंगफुल और नेचुरल चीज होगी। एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान में रखना होगा, मार्केट ने बहुत बड़ा करेक्शन दे दिया है पिछले 3-4 महीनों में, और बैंक निफ्टी अब लीड कर रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स अब लीड कर रहे हैं इस रैली को। तो मैं समझता हूं कि
रेट कट आए या ना आए, अगर मार्केट में आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है, उसमें अगर मौका मिलता है, तो आप बैंकिंग स्टॉक्स को ऐड करने की स्ट्रेटेजी बनाए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इवन स्टेट बैंक कल नतीजे आए थे। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर छोटा मोटा करेक्शन में लेने का मौका मिलेगा तो जरूर से लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आज आप कह रहे हैं हेमंत कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, कि आप चाहते हैं कि ना आए रेट कट, बल्कि या अनुज, बिकॉज ये एक सिंपल मैटर नहीं है। जिस तरह से रुपया गिर चुका है डॉलर के सामने, जिस तरह के इन्फ्लेशन के रिस्क्स हमारे सामने दिख रहे हैं, उसको ध्यान में लेते हुए आरबीआई बीइंग अ वेरी प्रूडेंट एंड कंजर्वेटिव सेंट्रल बैंक, मैं समझता हूं कि इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा रेट कट करने में। हालांकि प्रेशर जरूर है, मार्केट की एक एक्सपेक्टेशन जरूर है, पर आरबीआई का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एक लिक्विडिटी एनहेंसमेंट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होगा, और उसके बाद जो है वो रेट कट कर सकती है। तो कॉन्ट्रा व्यू है यहाँ पर हेमांग का कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कुछ एक एक्सपर्ट का कहना था कि जो लिक्विडिटी बाजार में अब आएगी, जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है कि आपको जिस तरह का टैक्स रिलीफ मिला है, हालांकि वो धीरे धीरे इन्फ्यूज होगा, वो एक झटके में नहीं आएगा, लेकिन क्या वो भी आरबीआई के बैक ऑफ माइंड होगा। और दूसरा, ये जो करेंसी डिप्रिसिएशन है, ये एक अपने आप में बड़ी चीज़ है। बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि आरबीआई के मन में वो चीज़ भी चल रही है। अदिति, आपको क्या लगता है, ये जो दो तीन फैक्टर है, खासतौर पर करेंसी वाला फैक्टर, वो आरबीआई के इस फैसले को कहीं से प्रभावित कर रहा होगा, या उसको आरबीआई एक अलग बॉक्स में रख के डील करेगा, और जो लिक्विडिटी उन्हें देनी है, चाहे वो रेट कट से देनी है, सीआरआर से देनी है, उसको वो अलग डील करेंगे? देखिए, मेरा व्यू पहले तो है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की तरफ अगर हम देखें, तो आरबीआई एमपीसी के जो करंट फोरकास्ट हैं, या मैं अपने ही फोरकास्ट ले लेती हूँ क्योंकि उनके फोरकास्ट शायद आज चेंज हो जाएंगे। तो जीडीपी पे हमारा व्यू है कि दोनों साल में FY25 और FY26 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% के आसपास रहेगी। जो हमारा अनुमान जो है मीडियम टर्म पोटेंशियल ग्रोथ का, उसके लोअर एंड पे है। तो वी थिंक मीडियम टर्म पोटेंशियल ग्रोथ इज 6.5 to 7%, और FY25 FY26 दोनों में 6.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को अगर देखें तो बेसलाइन एक्सपेक्टेशन ये है कि इस साल 4.8% सीपीआई इन्फ्लेशन रहेगी, और FY26 में घटकर 4.2% पे आ जाएगी। ये देखते हुए स्पेस है कि 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट हो सकते हैं। अब वो कब होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी डेफिनेटली करेंसी में हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है, स्ट्रेस देखा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी उतनी ही वॉलेटिलिटी है, और इमर्जिंग मार्केट करेंसी सब डिप्रिशिएट हुई हैं पिछले 2-3 महीने में। तो आईएनआर का यहाँ पे कोई स्पेशल आउट परफॉर्मेंस नहीं है कि ज्यादा ही आईएनआर में डिप्रिसिएशन हुआ हो और करेंसीज के मुकाबले। और करेंसी से रिस्क इन्फ्लेशन पे क्या आएगा? सबसे ज्यादा तो देखिए WPI पे आएगा, क्योंकि WPI में जो इंपोर्टेड कंपोनेंट है, ग्लोबल कमोडिटीज का, ट्रेडेड कमोडिटीज का कंपोनेंट है, वो बहुत ज्यादा है। तो जब इंडियन रूपी डिप्रिशिएट होता है, उसका इम्पैक्ट पहले तो WPI पे। नमस्कार। The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th yesterday, 7th today of this month. You are all aware that the governor's statement after the MPC meeting contains the resolution of the MPC with regard to the policy rate and stance. It also contains announcements and measures which have a bearing on the monetary and regulatory policies. The Monetary Policy Committee resolution is of course of interest to a large number of people from various walks of life. It impacts the lives of virtually all citizens of the country. The resolution also provides the rationale and the thought process of the MPC, and therefore is of relevance to businesses, economists, academicians, and the finance world. Apart from these MPC-related announcements, the governor's statement has become an important medium for the Reserve Bank to highlight its priorities on which it would like its regulated entities
to focus their energies on. It is an opportunity to point out areas of concern and challenges for the stakeholders to address their attention to. It is an occasion for the Reserve Bank to articulate its views on critical areas of interest. I will continue with this practice of a detailed statement after each MPC committee meeting. Now, before I come to the resolution of the MPC, kindly allow me a moment to reflect on the experience of the flexible inflation targeting framework. You are all aware that this inflation framework was put in place in the year 2016 and it was reviewed in the year 2021. You are all also aware that this is a monumental change in the monetary policy history of our country. And so I thought it fit that I reflect on the experience of the flexible inflation targeting framework. Well, I believe that it has served the Indian economy very well over these years, including the very challenging period since the pandemic. The average inflation has been lower post the introduction of this framework. Moreover, CPI has mostly stayed aligned with the target given under this framework, barring a few occasions of breaching the upper tolerance band since its inception. We in the Reserve Bank and the Monetary Policy Committee will continue to improve the macroeconomic outcomes in the best interest of the economy, using the flexibility which is embedded in the framework, while responding to the evolving growth inflation dynamics. Moreover, we will strive to further refine the building blocks of this framework by making advances in the use of new data, improving nowcasting and forecasting of key macroeconomic variables. We forecast, you are aware, growth, inflation, etc., because this is actually a forward-looking policy. And so we'll continue to do that and develop more robust models. On the regulatory front, I would like to mention, and especially there has been a lot of media attention with regard to some of the proposed regulatory changes pertaining to liquidity coverage ratio, expected credit loss framework for provisioning by banks, the prudential norms governing projects under implementation. We will continue to strengthen, rationalize, and refine the prudential and conduct-related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The interest of the economy demands financial stability and consumer protection. Our mandate in the RBI is to enhance both of them. At the same time, I would like to emphasize that the economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. It will be our attempt to strike the right balance, keeping in view the benefits and costs of regulation. I also want to reassure all stakeholders that we will continue with the consultative process which the RBI has been doing over the years in this regulation-making process. The suggestions of the stakeholders are very valuable, and we will continue to give serious consideration to them before taking any major decision. We will also ensure that the implementation of such regulations is smooth. We will give sufficient time for transition, and where regulations have major implications, the implementation will be done in a phased manner. Coming to the global economy,
The global economic backdrop remains challenging. The global economy is growing below the historical average, even though high-frequency indicators suggest resilience, along with continued expansion in trade. Progress on global disinflation is stalling, hindered by services price inflation. With receding expectations on the size and pace of rate cuts in the US dollar has strengthened, bond yields have hardened, emerging market economies have witnessed large capital outflows, leading to sharp depreciation of their currencies and tightening of financial conditions. Divergent trajectories of monetary policy across advanced economies, lingering geopolitical tensions, and elevated trade and policy uncertainties have exacerbated financial market volatility. Such an uncertain global environment has posed difficult policy trade-offs for emerging market economies. The Indian economy, though continuing to remain strong and resilient, also did not remain immune to these global headwinds, with the Indian rupee coming under depreciation pressure, as you would have noticed in the recent months. At the Reserve Bank, I would like to assure all of you we have been employing all tools at our disposal to face the multi-pronged challenges. With this backdrop, let me now come to the Monetary Policy Committee resolution. As I mentioned, we met these last 3 days, concluding today. And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook, as I mentioned, we are forward-looking, the MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously again to continue with the neutral stance and remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. I shall now state the rationale for the decision in brief. The MPC noted that inflation has declined, supported by favorable outlook on food and continuing transmission of past monetary policy action. It is expected to further moderate in 2025-26, gradually aligning with the target. The MPC also noted that though growth is expected to recover from the low of Q2 of 2024-25 this year, it is much below that of last year. Last year, you are all aware, it was 8.2%. This growth inflation dynamics opens up policy space for the MPC to support growth while remaining focused on aligning inflation with the target. And accordingly, the MPC decided to reduce the policy rate, by 25 basis points to 6.25%. At the same time, the MPC felt that excessive volatility in global financial markets and continued uncertainties about global trade policies, coupled with adverse weather events, pose risks to the growth and inflation outlook. This calls for the MPC to remain watchful. Accordingly, it decided to continue with a neutral stance. This will provide MPC with the flexibility to respond to evolving macroeconomic environment. With this now, I come to the assessment of growth
and inflation. First of all, growth. As per the first advanced estimates, real GDP growth for the current year is estimated at 6.4%. The numbers were released by MOSPI recently. This is a softer expansion after a robust 8.2% growth last year. Going forward, economic activity is expected to improve in the coming year. Agricultural activity remains upbeat on the back of healthy reservoir levels and bright Rabi prospects. Manufacturing activity is expected to recover gradually in the second half of this year and beyond. Early corporate results for Q3, and we have more than 50% of the results now as we speak. It indicates a mild recovery in the manufacturing sector. Mining and electricity are rebounding from monsoon-related disruptions in Q2. Business expectations remain upbeat, as evident from the PMI Manufacturing Future Output Index. Services sector activity continues to be resilient. PMI services, however, declined from its recent peak. On the demand side, rural demand continues to be on an uptrend, while urban consumption remains subdued, with high-frequency indicators providing mixed signals. And we are aware, we got the Nielsen survey report also just yesterday. Going forward, improving employment conditions, tax relief in the union budget, moderating inflation, together with healthy agricultural activity, bode well for household consumption. Government consumption expenditure is expected to remain modest. Higher capacity utilization levels, robust business expectations, and government policy support augur well for growth in fixed investment. Continued buoyancy in services export will support growth. Global headwinds, however, continue to impact uncertainty to the outlook and pose downward risks. Taking all these factors into consideration, the RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. The risks are evenly balanced. Coming now to inflation, headline inflation, after moving above the upper tolerance band in October, has since registered a sequential moderation in November and December, standing at 5.2% now. Going ahead, food inflation pressures, absent any supply side shocks, should see a significant softening due to good Kharif production, winter easing as we witness every year in the vegetable prices, and a favorable Rabi crop prospect. Core inflation is expected to rise but remain moderate. Rising uncertainty in global financial markets, coupled with continuing volatility in energy prices and adverse weather events, presents upside risks to the inflation trajectory. Taking all these factors into consideration, CPI inflation for the current financial year is projected at 4.8%, with Q4, the current quarter, at 4.4%. Assuming a normal monsoon, CPI inflation for the financial year 2025-26 next year is projected at 4.2%, with Q1 at 4.5%, Q2 at 4%, Q3 at 3.8%, and Q4 at 4.2%. The risks are evenly balanced. I will now come to the external sector. India's current account deficit moderated from 1.3% of GDP in Q2 of last year to 1.2% in Q2 of this year, 24-25.
According to the World Bank, India, with an estimated inflow of 129.1 billion US dollars, continues to remain the largest recipient of remittances globally last calendar year 2024. The current account deficit for this year is expected to remain well within the sustainable level. As on 31st January this year, I may inform you, India's foreign exchange reserves stood at 630 plus billion US dollars. This provides us an import cover of more than 10 months. Overall, India's external sector remains resilient as key indicators stay robust. I would like to mention over here, and especially because there has been commentary in the media about the Reserve Bank's exchange policy. Well, the Reserve Bank's exchange rate policy over the years has remained very, very consistent. Our stated objective is to maintain orderliness and stability without compromising market efficiency. The Reserve Bank believes in the market efficiency of the markets that we have in India for Forex. Accordingly, our interventions in the Forex market focus on smoothing excessive and disruptive volatility. It does not target any specific exchange rate level or band. The exchange rate of the Indian rupee is determined by market forces, and we will continue with this policy. Coming now to liquidity and financial market conditions, I may state that after remaining in surplus from July to November 2024, system liquidity as measured by the average net position under the liquidity adjustment facility did turn into a deficit during December 2024 and January 2025. This drainage of liquidity is mainly attributed to advanced tax payments in December 2024. You are aware there are quarterly advanced tax payments to be made, December being that particular month. For the advanced tax payments for Q3, that did have an impact. Capital outflows, again, one has witnessed some capital outflows because of various reasons. Forex operations, and a significant pickup in currency in circulation as we witness every year in January. It has been, however, I would like to mention over here that we have observed that some banks are reluctant to on-lend in the uncollateralized call money market. They are passively parking funds with the Reserve Bank. I take this opportunity to all the banks to urge them to actively trade amongst themselves in this uncollateralized call money market, so as to make it deeper and vibrant for better signal extraction from the weighted average call money rate. The Reserve Bank is committed. I want to assure everyone that the Reserve Bank is committed to provide sufficient system liquidity. We have taken a number of steps in this regard, and we will continue to monitor the evolving liquidity and financial market conditions and proactively take appropriate measures. I repeat, proactively take appropriate measures to ensure orderly liquidity conditions as may be required for the system. And when I say liquidity, it means not only transit, overnight liquidity, but also durable liquidity to meet the requirements of the system. I now come to financial stability. The system level financial parameters for the scheduled commercial banks continue to be healthy. The credit deposit ratio for the banking system at the end of January 2025 was at 80.8%, broadly similar to that on 30th September 2024. Bank liquidity buffers are sufficient, though the net interest margin moderated, return on assets and return on equity are robust.
the system level parameters for NBFCs too are very healthy. I also take this opportunity today to mention that the Reserve Bank has been observing Financial Literacy Week annually since 2016. This is with the purpose to enhance financial education in our country. Last year too we did this campaign. This campaign was focused last year on empowering youth adults. This year, recognizing the critical and multifaceted role of women in society, this campaign will emphasize on women's role in financial decision making and household budgeting. I sincerely urge all banks to actively participate in this campaign on the theme Financial Literacy, Women's Prosperity. It starts from 24th of this month. Now, before I conclude, I shall be announcing some additional measures. Necessary directions and circulars for these shall be issued separately. First of all, on digital security, the rapid digitalization of financial services has brought convenience to all of us, at the same time efficiency, but it has also increased exposure to cyber threats and digital risks, which are again getting sophisticated day by day. The surge in digital frauds is a matter of concern. It warrants action by all stakeholders. The Reserve Bank has been taking various measures to enhance digital security in the banking and payments system. Introduction of additional factor of authentication for digital payments is one such measure. It is now proposed to extend this to online international digital payments made to offshore merchants who are enabled for such authentication. Second, the Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. The banks and NBFCs, I would urge them to also continuously improve preventive and detective controls to mitigate cyber risks. They must develop robust incident response and recovery mechanisms, reinforced through periodic testing for operational resilience. Third measure that I am announcing today, over the past few years, we have expanded the suite of interest rate derivative products available to market participants to manage their interest rate risks. We shall now, to this suite, include forward contracts in government securities. This would facilitate long-term investors, such as insurance funds, to manage their interest rate risk across interest rate cycles. It will also enable efficient pricing of derivatives that use government securities as underlying instruments. Fourth, to enhance access of retail investors to government securities, the Reserve Bank has taken a number of steps earlier. There's another step, that I am announcing today, and this pertains to expanding the access of NDS Home, our platform for trading the secondary market transactions for government securities, to non-bank brokers who are registered with SEBI. A number of them are registered with SEBI. They will also get an opportunity now to participate and trade through the NDS Home, the electronic trading platform of RBI for government securities. Fifth, in view of the various developments in financial markets and market infrastructure over the past few years, we shall be setting up a working group with representation from various stakeholders to undertake a comprehensive review of trading and settlement timing of markets regulated by the Reserve Bank. There are some 5 such markets
which have different timings. The group shall submit its report by 30th April this year. To conclude, considering the existing growth inflation dynamics, the MPC, as I mentioned earlier, while continuing with the neutral stance, felt that a less restrictive monetary policy is more appropriate at this current juncture. The MPC will take a decision in each of its future meetings based on a fresh assessment of the macroeconomic outlook. We are committed to conduct monetary policy and take such measures as appropriate, which are timely, carefully calibrated, and clearly communicated to facilitate conducive macroeconomic conditions that reinforce price stability, sustained economic growth, and financial stability. Thank you, Namaskar, and Jai Hind. ओके तो देखिए नए गवर्नर की पहली पॉलिसी और मार्केट का रिएक्शन देखिए आप एक बार इंट्राडे फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी का रख देते हैं, उसके बाद मैं इस सारे डिसीजंस पर आऊंगा। एज एक्सपेक्टेड 0.25% का रेट कट आया, पहले रैली आई और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, और बैंक निफ्टी में भी देखिए आप पहले रैली आई और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। यही एक विपिन जी मेरा व्यू था कि पॉलिसी में अगर रेट कट तो पहले एक बार रैली आए और फिर शायद प्रॉफिट बुकिंग आए। अभी प्रॉफिट बुकिंग जहां रुकेगी वहां इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्विकली बता देता हूं क्या क्या मेन स्टेप्स रहे। एक तो यूनानिमस रेट कट आया 6.5% से 6.25% का वो रेट कट पॉलिसी रेट में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था, स्टांस जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन एक चीज जो कही है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, ग्रोथ ऊपर आ रही है, और ग्रोथ के प्रोजेक्शन शायद आगे आगे ऊपर आएंगे। तो वो जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डायनामिक्स हैं उनकी वजह से एक आरबीआई के पास आगे शायद थोड़ा स्कोप रहेगा। लेकिन देखिए अभी इसके अलावा कुछ नहीं आया, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया। कुछ और इंपॉर्टेंट जो आपने पिक किया पॉलिसी में? नहीं, वही है जो आपने कहा कि आखिरी में जो उन्होंने सेंटेंस बोला कि ये आगे के लिए वो कोई ऐसा आपको इशारा नहीं दे रहे हैं कि आगे भी रेट कट जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल लगातार जो भी परिस्थितियां हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं या हमारी अपनी इकोनॉमी की, उस पर नजर बनाएंगे और हर पॉलिसी में अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। तो मतलब इसे ये ना माना जाए कि रेट कट का कोई सिलसिला शुरू हो गया है जो आगे चलता रहेगा। तो जो न्यूट्रल स्टांस वाली बात है अनुज जी, ये तो आपने बताया था पहले कि एक पहले अप और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, और वैसे ही होता हुआ मार्केट में दिख रहा है। बट ऑन द ब्रॉडर साइड जो अभी हमारे ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए अब? देखिए विपिन जी, एक चीज़ तो है कि रेट कट तो आ गया एज एक्सपेक्टेड, और स्टांस भी न्यूट्रल रहा। लेकिन एक चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि